Namaste everyone. I hope you're doing okay. मैं कोशिश कर रही हूँ to start this video series if I'm able to keep up with it, of course. This is about sharings that ऐसी चीज़ें जो हमारे रात के 3 AM वाले थॉट्स होते हैं फर्स्ट, बट I have been a very sensitive, psychoactive, psychic person all my life. And मैंने it's like कुछ चीज़ें हैं जैसे like people have this system, this belief कि spirits ऐसे होते हैं, ऐसे possess हो जाते हैं. Like this is gonna be very occult stuff जो मुझे हमेशा से बात करना है, मेरा favorite है. And I have been putting this कि कौन ही देखेगा मुझे, but I've decided to finally come out and talk about these things because it's like कुछ चीज़ें as a kid, no one gave me any education about it. I just knew them. And I want to share it with the world. And this is really gonna be my moon in 12th house, dominant moon Saturn thoughts. And if that's something you also have, then you're gonna hardcore relate with me, so stick around. There's gonna be a lot of occult stuff, and the main point of making these videos is so I can connect with a part of myself, because usually मैं इन चीज़ों के बारे में किसी से बात नहीं करती हूँ, ना खुद बात करना प्रेफर करती हूँ इतना, बिकॉज आई फील लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इट्स बेटर टू नॉट स्पीक अबाउट देम अगर आपको पता है कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी. टुडे वी गोना टॉक अबाउट समथिंग जिसके ऊपर मैं रिसर्च भी कर रही हूँ, एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स में, हमारे ज्ञान में ये एक संस्कृति का पार्ट रहा है. दिस वॉज अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन विच वी डोंट गेट नाउ. And this is about how when you start meditating and you start doing intense sadhanas and you are putting yourself there कि I have to make a practice, I have to do a routine, I have to do this, that and all of that, there will be some force stopping you. And this force is not here to create resistance. It is here to push you forward in your practices, in your sadhana, in your whatever practice you are initiated into. कुछ भी आप रेगुलरली कर रहे हो, करना चाह रहे हो, आपको किसी गुरु से दीक्षा मिली है, या आप खुद जैसे some people chant दुर्गा स्तुति और some स्तुतिज and all of that. The resistance जब मेरे साथ पहले हुआ, when very first time I got initiated with Isha, this resistance made me feel bad, guilty. I used to feel I'm not a good enough person, like I can't even do my practice regularly, I cannot wake up. Even right now when I'm shooting this video, it's 2:30 and I'm unable to sleep on these days. I prefer to not sleep, in fact, because I have very psychoactive dreams and I'm scared to dream, and I am bombarded with stuff in my dream, and I'm constantly trying to listen to music or subliminals. I can clear my subconscious karma because this is one thing that no one will tell you, but this always happens when you start meditating, is a lot of past karmas come and they become the resistance, or they become the blockage in your path. And हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें फंसा देते हैं, एंड हम फंस के हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें. लाइक वी सेल्फ डाउटेड, बिकॉज आई हैव डन दैट अ लॉट, and I know a lot of people do that, and we drop out of the practice कि I'm not able to put up with the routine or something like that. मैं नहीं करूँगा. I've been there too. Done that. I want to talk more about this in detail, and if that is something that matches with you, stick around. सबसे पहले ये कि हमें अपने दिमाग को समझना बहुत नेसेसरी है. आपके दिमाग में 4 भाग हैं. जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो वो आपका कॉन्शियस यानी ऊपरा फ्रंटल लोब है. दैट्स योर कॉन्शियस माइंड. देयर इज सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज अनकॉन्शियस माइंड, एंड देयर इज सब अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट. 4 भाग है. वी लर्न दिस इन इंजीनियरिंग, but psychologically speaking, the subconscious mind is activated when you sleep.
unconscious mind and the other part of it is never activated. It's dormant. It's the backside of your brain that never occurs. It only occurs जब कोमा में हो, तब unconscious हो. You're in a certain state. You're not dead, but you are in the unconscious state. When you do a meditation or a practice, or when you devote yourself to something in this life, in this karma, you activate your subconscious mind. You activate pathways and channels from there. You manifest from your subconscious mind. There are some past life things stored in your subconscious mind, and people speak about कि इसमें मात आ गई है, या ये possessed है, या इस पे काला जादू कर दिया तो इसके अंदर किसी की आत्मा आ गई. I want to come here and clarify. आपके cases different हो सकते हैं, but ऐसा कुछ नहीं होता है. There are different types of spirits. There are different types of bhutas, pishachas, and there's different, okay, danavs and asuras and all of that. And they cannot go in your protection realm, your aura protection realm, and they cannot enter the field and possess you. This is true for every single person. कुछ लोगों का ऑरिक फील्ड वीक होता है. मैं पहले समझा देती हूँ ऑरिक फील्ड क्या होता है. हम टॉपिक में ज़्यादा घुस रहे हैं. फील हर इंसान, क्योंकि हम जीवित इंसान हैं, हमारे अंदर प्राणा की शक्ति है. सो व्हेन यू टेक अ ब्रेथ इन, you breathe in the prana. When you take a bit out, you dissolve it. You breathe in and you breathe out. Karma का starting point है prana. अगर आप सांस नहीं लोगे, you'll die. Prana ends, karma ends. In this life it ended, but it goes back to your subconscious mind. So it does not end. You need to work on it, clear it out, and go about that. The breath is the key aspect of it. Some people have breathing issues. They cannot breathe. Asthma. It's because a part of your brain is blocked and energy is blocked, and you're unable to breathe properly. And you will see, जब आप खुल के सांस ले पा रहे हो with the open posture, with yoga, whatever, you feel more active in your mind. You feel more better. You feel more, energetic. Try doing it. Try just going out and actually there is no fresh air left in India anymore, but wherever you can, outside in the sun, try to come out and sit with your, try to do the diaphragmatic breathing, try to breathe from your heart, and you will see that your nose immediately opens up and you feel a lot of prana coming in. And you feel much better. Stress goes away because it's all your brain not getting enough oxygen at the end of the day. The topic is subconscious mind. Coming back to that. हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ों का हब है. हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. हम बहुत सारे पॉइंटर्स को, पास्ट लाइफ की चीज़ों को बचा के रखते हैं अपने दिमाग में. होता ये है कि पोजेशन की अगर मैं बात करूँ, पोजेशन वर्क्स इन दिस वे. जो लोग बीमार हैं या जिनका ऑरिक फील्ड वीक हो गया है किसी रीज़न के वजह से, ऑरिक फील्ड प्राणा कम होने की वजह से वीक होता है. और एक फील्ड अगर आप स्टक हैं लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी से ससेप्टेबल हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इश्यूज, आपका और एक फील्ड वीक होगा कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. फिजिकल इलनेसेस weaken them. Living environments. If you're living in an environment that is very negative, same energy, same thoughts, waste is getting repeated and recycled, it blocks your auric field, weakens it, and you're more susceptible to getting influenced by these negative forces. I used to think कि asuras तो कोई से demonic सी entity होगी, just like how devatas are like that. But in this 3D reality that we live in, we put a murti of devata and we worship him. It's the energy of the devata that matters to us. Okay. Similarly, asuras are in the form of energy. They're not some demon who's gonna, do something. That energy is something you attract from your own subconscious mind and break it for you. Manifestation hota hai that you, manifestation, vision board, attraction, all of that, people sell all kind of courses about it. It's all training your conscious and subconscious mind to work in collaboration with each other. I can say this with utmost confidence to you, and you can take my word. I'm literally more in 12th house.
I have done nothing but manifested my current life that I'm living in. I have done it without even knowing कि manifestation क्या है. I have done it by living through it and understanding कि what the fuck is it. How can I go about it? हमारा सबकॉन्शियस माइंड पास्ट की चीज़ों को पकड़ लेता है. सपोज आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ, तो पुराने टाइम में जो भी आपके साथ बुरा हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी मेमोरी रिटेन करके रखेगा और आपको कॉन्शियसली याद नहीं भी है. दैट इज़ वाई हमारे सपने कई बार मीनिंगलेस होते हैं, बट ड्रीम्स एंड द ड्रीम रियलिटी ऑलवेज हैज अ मीनिंग. I have studied dream reality too well. I have manifested a love through my dreams, career, money, luck through my dreams. I've manifested to have a good day at my work through my dreams, and it works. And that is why I know subconscious mind is the powerhouse. Mitochondria is the power of the cell. Subconscious mind is the powerhouse of your being because it stores very important memories that your brain remembers and requires for this current life, and these memories come from past life. And you might not remember your past life, but someone else can see that in you. Do you know why? Because your subconscious mind projects that image to that person, and उनका भी subconscious mind active है. इसलिए कुछ लोग देख के ही, आपकी शक्ल देख के बता देते कि हाँ पिछले जन्म में ये थे. कुंडली खोल के शक्ल देख के they can tell you that, and it's very much possible if you have an active subconscious mind. People who have a troubled subconscious mind, that means they are either patients of trauma, physical, emotional, psychological abuse in past, and they are उस चीज़ को निकाल नहीं पाए हैं अपने सिस्टम से, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं. इट्स पेन, इट्स फियर, इट्स गिल्ट, इट्स ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस दैट दे आर होल्डिंग इन देयर हार्ट. ओके, अगर आप ये चीज़ें दबा के बैठे हैं एंड बहुत सालों तक दबा के बैठे हैं, एंड your life karmas have changed, you have changed as a person, of course, because if you hold these things for a very long time, you're not going to be the same person as you are. You will move backward rather than moving forward. आपकी लाइफ में मल्टीपल साइकिल्स रिपीट होते जाएंगे, सेम चीज़ें होती जाएंगी. एक एज के बाद आपको मैटर भी नहीं करेगा. यू विल बी लाइक जिंदगी है, जीना है, कल मर जाऊँ, परसों मर जाऊँ, आई डोंट केयर. ये एक साइन है आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक्ड है, एंड कोई इमोशन ब्लॉक्ड है, उसमें बहुत टाइम से कचरा भर रहा है, अब उसमें नई चीज़ें नहीं आ रही हैं. द मोमेंट योर सबकॉन्शियस माइंड इज ब्लॉक्ड, यू कैन नॉट मेडिटेट, you cannot sit for any kind of a practice. And the ati or the limit, इसका अति ये होगा कि अगर इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाए कि आप फंक्शन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली इस एग्जिस्टेंस में, इस रियलिटी में, आपको पता नहीं है बिकॉज सबकॉन्शियस रेल्म में हो रहा है, कॉन्शियस रेल्म में हो नहीं रहा है. बाहर सब ओके है, बाहर से आप देखने में सुंदर सुशील प्यारे लग रहे हैं,